I am before, I am after, the soul of all souls, forever. I make men love, peace, and unite, putting down the black words on white. You and I are the veil between heaven and earth. Lift this veil and you will see how all people are one. During the 13th century, they were a band of men who conquered not countries, but the very soul of man. From Central Asia, they traveled across half the world, from Turkey, Iran, and Afghanistan to India, preaching universal love, irrespective of individual faith. They preached a sphere of spiritual experience, parallel to the mainstream of Islamic consciousness, practicing all the tenets of the Islamic faith. They actualized the spirit of Islam, acting on the Quranic message. God loves those who do what is beautiful. As they wore rough garments of coarse wool called suf, and believed in the purity of self, they came to be known as Sufis. The singular seed at the core of Sufi belief is internalizing the message and spirit of Islam, which emphasizes the primacy of mercy over wrath. Closest to God is the one who possesses the magnanimity of the river, kindness of the sun, and the humility of the earth. When migrant Sufi saints crossed into the Indian peninsula, they found a culture already immersed in the quest for God, well versed in metaphysics and the arcane sciences that sought to understand the universe. Indians were drawn to the Sufis' mystical abandon that appealed to them rather than the formal side of Islam. The Sufi heritage never truly blended with the Sharia or conservative Islamic law.
Yet, it adapted to the religions and cultures of the region, spreading almost everywhere through its orders. The Sufis believed themselves to be on a spiritual journey towards God, or the Beloved, and to experience Him while alive. This journey is referred to as the path or tariqah. The Sufis, seeking the freedom of the soul from the prison of shadows, established themselves across the subcontinent in different religious orders or silsilas, promoting a certain tariqah. Each tariqah became focused on one divine teacher or sheikh, who was responsible for taking a disciple through this journey, and turned into a school designed to perpetuate his type of teaching, mystical awareness, and rules of life. The four prominent orders of the tariqahs in the Indian subcontinent were the Chishtiya, Suravardi, Naqshbandiya, and the Qadariya. Most Indian Sufi places of worship are known in India as dargahs and are centered on the tombs of the sheikhs. These dargahs became sanctums for those who sought the presence of God. In time, they became places of prayer where worshippers gathered in search of benediction and to ask for their personal wishes to be fulfilled. Faith in the sanctity and blessed power of the dargah continues and attracts thousands of devotees from all walks of life. One of the most revered is the dargah of Sheikh Muinuddin Chishti of Ajmer, a 13th century saint and founder of the Chishtiya Silsila in India. Kings and beggars alike have visited and continue to visit his dargah in the princely state of Rajasthan from all over the world. After Muinuddin Chishti, Sheikh Nizamuddin Aulia of Delhi in the 13th century, and after him Sheikh Nasiruddin Chirag-e Dilli were regarded as the Chishtiya Silsila's mediums of power. Their tombs are also places of worship. Sufism provided a philosophy which was diluted and adapted to the needs of the masses. Not just a great teacher, but his successors too were seen as the heirs of his spiritual power. The spiritual heir of the founder saint is called
Sajada Nashin. It means the master of the prayer mat, since he richly inherits the founder's prayer mat as a symbol of his authority and spiritual heritage. Sheikh Hazrat Hasni Mian is one such personality, the Sajada Nashi of the Niazia silsila of Bareilly Khanqah in India. A silsila which was established by Shah Niaz Ahmad Niaz during the early 19th century. सूफीज़म एक सोच है, समझिए, और वो ये है कि सब कुछ अच्छा बुरा जो भी है सब उसने बनाया है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो अच्छी तरीके से रहें और अच्छी तरीके से रह के चले जाएं। जैसे कि अल्लाह वालों की पहचान ये है कि पानी की तरह सखी हो, जिसे कोई पी सकता है, किसी भी धर्म का आदमी, और ज़मीन की तरह आजिज़ी इनकिसारी हो, उसमें कोई भी कुछ बना सकता है, कहीं पे भी कोई भी, इससे सूरत की तरह शफ़क़त हो उसके अंदर, सबको मोहब्बत और प्रेम करना, ये तीन चीज़ें हैं उसकी पहचान है अल्लाह वाले की। The foundation of each Sufi order or silsila is based upon the spiritual training of a murid under the direct supervision of the master, who is called murshid or peer in the Indian context. This sacred bond between the master and the disciple is called Ta'alluf. खानकाह शरीफ में जब आया था तब 7 साल का था, और उस वक्त सरकार अजीज़ मियाँ साहब क़िबला के बच्चों के साथ खेलता था। ये बात है सन 1943 की। अजमेर शरीफ के उर्स में मैं सरकार के साथ अजमेर शरीफ गया हुआ था। वहाँ पे ही सरकार ने मुझ पर कृपा की और मुझे अपना शिष्य बनाया। उसके ऊपर मैंने एक दोहा कहा, जब लियो हाथ में हाथ, दीनानाथ बहु कृपा कीनी, और मुझे अपना कर लीनी, काम क्रोध मोह सब कुछ हर लीनी, और मोहे हरिका कर दी। I am a professor at a university in Mexico. My Christian name is Cristina Pelayo. My Muslim name is Mariam Fatima Niazi. I came to this holy place about 6 or 7 years ago because all my life I have been searching for Sufis. I feel it's a question of the power of the peer. You cannot go alone in life. It's a matter that you have somebody to guide you. The Ta'alluf is bound by a code of conduct called adab. The physical presence of the murid or hazari to pay respect to his peer in person is essential. This shows his unconditional
and unqualified respect for the peer. The murid often lavishes tokens of his love upon his peer. The giving of such gifts is known as nazar and forms an integral part of adab, especially during ceremonies and festivals. This relationship between the master and disciple is free of caste, color, or creed, and regardless of socio-economic background. किसी के साथ कोई सलूक करते वक्त भेदभाव नहीं बरता जाए कि कौन किस मज़हब, किस फ़िरक़े, किसका आदमी है। उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम किसी नई जगह पे या हमारे साथ थोड़ा बहुत भी भेदभाव बरता जा रहा है। वो जब तक सुकून महसूस नहीं करेगा, जब तक अपने आप को ये महसूस नहीं करेगा हम सही जगह पहुंच गए हैं, तब तक उसकी मदद नहीं हो सकती। तो इन खानकाहों में हमेशा से ऐसा अमल रहा है कि लोगों को उन्होंने दुख दर्द में बराबर का शिरकत करी और उनको पहले तरजीह दी, जो बाहर के लोग गैर लोग आए हुए थे, कि वो अपने को गैर ना समझें। I'm Manju and I've been a murid of Sarkar for the last 8 years. The only thing that I felt when I came here or whenever I come here is the love and the acceptance and total affection from every single person in the khanqah, whether it's a small child, whether it's an old man, whether it is Sarkar or Sarkar's brothers or his relations. Everybody here loves you and nobody asks you what your religion is, and they want to make you happy, they want to make you comfortable. So I think the most important thing is a lot of love and a lot of affection and total acceptance, which is very, very difficult to get. राजा प्यार से बोलते हैं, वैसे नाम है मेरा अथर नियाज़ी। हमने माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा थोड़ा दिल के अंदर। आपके जो चेहरे को मैंने देखा जब हम मुरीद नहीं थे, तो एक दिल के अंदर अजीब सी एक कशिश हुई और ये लगा कि कहीं यही तो हमारे भगवान नहीं है। मेरे को एकदम अंदर से हुआ, तो यहाँ से हम चले गए सीधा। तीसरे दिन ही मेरे को एक सोते में, समझ लीजिए आप, ये सपना समझ लीजिए, एक बशारत सी हुई। तो अकेले हम आए, यहाँ पे हैं एक नसीम नियाजी, बहुत अच्छी फ़नकार हैं वो। तो उनसे मैंने फरमाया कि हम मुरीद होना चाहते हैं। तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम उन्होंने ही आज जो कुछ हैं, जितना उनका शुक्रगुजार कर, तो उन्होंने ही हमें ये दर्द दिखाया और आज जो कुछ भी बने हैं हम, तो आप ही के लिए बने हैं। उसी के हाथ में सबकी डोर, सबसे वही महान, वाकी रजा में जो राजी, वाकी रजा में जो राजी, चढ़े वही परवान। ये ज़िंदगी मेरी दूसरी ज़िंदगी है, मैं लाइलाज हो चुकी थी। सब जानते हैं, पूरी खानका के डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये 12 घंटे से ऊपर जीने का सवाल नहीं। ऑल ओवर सब कुछ, लिवर विवर सब कुछ डैमेज था और इतनी स्वेलिंग थी, दुनिया के इलाज कर लिए लेकिन कोई शिफा नहीं। मैंने अपने पीर मुर्शद, अपने उस्ताद फ़कीर शाह मोहम्मद हसन सज्जाद, जो कि सज्जादा नशीन खानका आलिया नियाजिया के, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनसे अर्ज़ कराया कि जाओ भाई मेरे मुर्शद और मेरे उस्ताद से जाके अपनी लड़की को भेजा कि अर्ज़ करना कि बस ये आपके हुक्म की तामील की है नसीम नियाजी ने। इस नसीम नियाजी ने आपके हुक्म की तामील की है, जो ये 5-7 दिन इस हॉस्पिटल में है। अब आप करम फरमाएं कि मुझे घर बुला लें। मुस्कुराए, आपने कहा ठीक है, उसे ले आओ। मैं स्ट्रेचर पर ही गई थी और स्ट्रेचर पर ही वापस आई। ऑक्सीजन मैंने फेंका और कहा कि इलाज तुमसे ना होगा, तबीब रहने दो। मैंने उनसे अर्ज़ करवा दिया है। मैं सीधी यहाँ आई। यहाँ आने के बाद सिर्फ एक बोतल ग्लूकोज की मेरे चढ़ी। उसके बाद में मैं उनको देखती थी, कुछ अपनी आरज़ुएँ, अपनी इच्छाएं जो हैं हम लोगों में, अर्ज़ किया करती थी। ये यकीन मानो कि 1 हफ्ते के बाद, 1 बोतल के बाद तो मैं चलने फिरने उठने बैठने लगी, बिल्कुल ऐसी हो गई। डॉक्टरों ने आन के जो चेक किया, कहने लगे आप तो बिल्कुल, शी इज़ परफेक्टली ऑलराइट। The peer-murid relationship is eternally kindled by a discourse of divine love, ishq-e-hakiki, and this helps the murid to pass through various stages or madraj to reach spiritual dissolution
called fana. This new experience of ecstatic union is called sukra, or intoxication. It culminates in ultimate knowledge or unity with God, known as Tawheed. Although traditional Islam has experienced a tension between orthodoxy and Sufism regarding veneration of saints, the Pir-Murid relationship has persisted all over the Islamic world. Rumi, the Sufi saint, addressed mankind. Come again, whoever you may be, whether an infidel, a fire worshipper, or pagan. No matter whether you have broken your vows 1,000 times, ours is not a door of despair. Just come as you are. The goal of the Sufis is to achieve nearness to God by assuming the attributes of God as their own, the foremost being love. The teachings of the Sufi way of life were dispersed through independent institutions known as khanqahs, or the abode of the divine teachers. The khanqahs became the focal point for people to be closer to their teacher. And also a place to seek remedies for life, using methods which may seem impractical or even superstitious. लग रही है लग रही है लग रही है पानी पिलाए तो बहुत जोर से आग पड़ी पेट में। जो झाड़ा होता है यहाँ पे, ये एक साइंस की दुनिया को एक चैलेंज है। इवन डॉक्टर्स का मेयर एंड सी कि हम लोग जब झाड़ते हैं तो वी डू नॉट गिव एनी मेडिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज कि आपने ये मेडिकेशन दे दिया तो उसकी वजह से ये चेंज आ गई। तो यहाँ पे हम लोग जो झाड़ते हैं वो सिर्फ अल्लाह के नाम से झाड़ते हैं, और अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है, इतनी पावर है। और ये मैंने बताया ना आपको, एक साइंस दुनिया के लिए एक चैलेंज है। आजकल डॉक्टर नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स आते हैं और देखते हैं, हैरत होती है कि भाई किसी भी तरह का कोई ना कोई मेडिकेशन तो आप दे रहे हैं, आप किसी तरह का कोई लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, कोई इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। बस हम लोग हाथ झाड़ते हैं और विद इन मिनट्स, और कभी कभी सीरियस केस होता है तो घंटा भर भी लग जाता है। Idris Shah says that Sufism is practiced by all communities, always in one form or the other, because it awakens a higher level of fulfillment in humanity and thus attains diversity and perfection. Sacred numbers and symbols, the power of words, perfumes and incense, rituals and purifications, charms and incantations, accompanied by music, are employed to condition a follower and open up his consciousness to the supra-sensory world. So are the invoking of angels and other spirit beings. Sufism is practical wisdom and knowledge employed to gain revelation of the ultimate truth or oneness with God, the means of finding love in devotion. The Sufis taught that one must destroy one's ego and eventually dissolve his being in a state of nothingness. The practical goal, therefore, became the attainment of ecstasy to experience the divine.
Music became a vehicle and an essential means for attaining the spiritual climax. म्यूज़िकली बहुत अलग आपको मालूम होगा कि सूफियाना क्या चीज़ है, रूहानियत क्या चीज़ है, उसका ताल्लुक़ आत्मा से बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें हमारी एक सिर्फ पुकार रह जाती है और लगता है कि हम अपने पीर को कैसे खुश कर सकते हैं। गाना बजाना हर चीज़ भूल करके जो एक लफ्ज़ है, शब्द है, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है और वो एक हमारे लिए एक इबादत बन जाती है। दर्द दिल की मेरी दवा तुम हो, दर्द दिल की मेरी दवा तुम हो, मेरी कश्ती के नाखुदा तुम हो, मेरी कश्ती के नाखुदा तुम हो, दर्द दिल की मेरी दवा तुम हो, दर्द दिल की मेरे दवा तुम हो, दर्द दिल की मेरे दवा तुम हो। तुम न तोड़ो मेरी उम्मीदें दिल, तुम न तोड़ो मेरी उम्मीदें दिल, मेरी उम्मीद व आसरा तुम हो, मेरी उम्मीद व आसरा तुम हो, मेरी कश्ती न नजरे तूफान हो, मेरी कश्ती न नजरे तूफान हो, लाज रख लो कि ना खुदा तुम हो, लाज रख लो कि ना खुदा तुम हो, राज अपना ये राज भी कह दो, हैरती मैं हूँ आईना तुम हो। इस दुनिया से दूसरे दुनिया में ले जाने के लिए, अल्लाह की तरफ राग़िब करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए मौसीक़ी को ज़रिया बनाया कि आदमी उसमें बैठ के थोड़ा बहुत जो है वो अपने जो अल्फाज हैं वो उसके मौसीक़ी साथ साथ मिलाएगा तो उसका रंग दुबारा हो जाता है और वो हल्के हल्के इस दुनिया से दूसरी तरफ जाने लगता है। तो मौसीक़ी के अंदर जो लुत्फ़, जो मज़ा जो है और जो एक पाकीज़गी है, सफाई है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसलिए उन्होंने मौसीक़ी को इबादत का ज़रिया बनाया। Love is the great theme which runs through the ocean of Sufi poetry. निकला बेगाना ए दिल हम जिसे अपना समझे, निकला बेगाना ए दिल हम जिसे अपना समझे, वो था वही दुश्मन जान जिसको मसीहा समझे। वो शेर है कि वो थी परछाई किसी और की मालूम हुआ, वो थी परछाई किसी और की मालूम हुआ, एक मुद्दत जिसे हम अपना ही साया समझे, एक मुद्दत जिसे हम अपना ही साया समझे। दोस्तों तुमसे जो पूछे कोई उल्फत क्या है, दोस्तों तुमसे जो पूछे कोई उल्फत क्या है, उससे कहना कि वो कासिम के यहाँ जा समझे। हार्ट बीट भी एक रिदम है, उससे फर्क पड़ता है। मतलब एक किस्म से जोश भी आता है। कितनी बड़ी आप पोएम लिख दें, कविता लिख दें, नज़म लिख दें, तो वो आदमी को याद हो जाती है। सुनी एक बात नाराज की, यह है शान बंदा नवाज की, न छुपे रहे न आया हुए, न ये हो सका न वो हो सका। In traditional Islam, the recitation of Quran is the most important example of pitched sound, apart from which the religious attitude towards music ranges from acceptance to complete rejection. However, the Sufis believe that music helps to free the body from conscious thought, since both the mind and will must be suspended if ecstasy is to be attained. The sama, or spiritual concert,
therefore became a feature of Sufi practice. Qawwali, or the spiritual song, which is a presentation of mystical poetry in order to arouse mystical emotions in an assembly of listeners, became the essential part of Sama. One or two solo singers performed the Qawwali with a chorus in the background, characterized by repetition and improvisation of the poetry. The vigorous drum accompaniment on the barrel-shaped dholak is reinforced by clapping of hands, while a small portable harmonium underscores the melody. It is a spiritual song that transports the mystic towards union with God. Ceremonies and festivals form an integral part of the Sufi calendar. Chiraga, or the oil lamp ceremony, is one such occasion. An oil lamp is lit and given by the Peer to his murid, who in turn asks for a wish and places it on the dargah. Once the wish is fulfilled, the murid offers a silver or gold lamp as a token of his happiness and devotion. एक बहुत बड़ा हमारा केस था, बहुत बड़ी अमाउंट हेल्ड अप थी, तो कोई वो बेईमानी कर रहा था उस अमाउंट की, तो किसी भी तरह से केस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ आके पिछले साल मन्नत मानी कि हमारा वो केस सॉल्व हो जाए और हमारा अमाउंट रिलीज़ हो जाए, तो फिर हम सोने का चिराग चढ़ाएंगे यहाँ। तो फिर ये हमारा केस सॉल्व हो गया, हमारी अमाउंट रिलीज़ हो गई, तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, तो हम लोग फिर ये चिराग चढ़ाने आए। अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला कैसा अनोखा उजाला, तो शंबे का दिन है शहर का उजाला, तो शंबे का दिन है शहर का उजाला, लो मक्के में पैदा The founder saint is regarded as the source of a universal power. Once a year, a grand celebration takes place to celebrate the union of the founder saint with God. This ceremony is called Urs, or union. उर्स के मायने हैं शादी।
असल में हम बुज़ुर्गों को समझते हैं कि ये जो हैं लोग अपने कब्रों में ज़िंदा हैं। जो अजीम लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी मरते नहीं, हमारा मानना ये है। और ये उर्स जो है एक याद है, यादगार है। जैसे हम किसी को भूल जाते हैं, किसी ने क्या कारनामे हैं, किसने क्या ज़िंदगी, किसने क्या तालीमात हैं, क्या है, तो वो उसको भूल जाते हैं हम। इसीलिए लोग ऐसे मौके पर इकट्ठे होते हैं और उनको याद करते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने क्या हमें पैगाम दिया, हमने उस पर अमल किया नहीं किया। तो ये ख़ास मौका है दुआओं का, उसको साथ रहने का, उनको याद करने का, उनकी तालीमात पर अमल करने का। तो सूफ़ी खानकाहों में उस वक्त बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन सा होता है। तो जब एक आशिक अपने माशूक से मिलता है तो क्या कहलाते हैं? वसल, मिलन, उरूस, यानी शादी हो। तो वो एक खुशी का मौका होता है। और जो वसल का मौका होता है, मिलन का वो होता है, वक्त होता है, वो एक आम आदमी के लिए भी, आपका जब किसी आपके जिससे आप प्यार करते हैं उससे जब आप मिलते हैं, मिलन का वक्त होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उर्स मीन्स होता है मिलन अल्लाह का और उसके बंदे का, जो एक सच्चा बंदा, वली का। और हम लोग यहाँ बहुत फेथ करते हैं, हमारी जो भी मुराद होती है हमारी पूरी होती है। The tomb of the founder saint, followed by the tombs of his successors, is washed with rose water, and this ceremony is called ghusl. The water which flows out from the ghusl is regarded as sacred. Even a single drop considered divine by the followers. The Sajada Nashin, or divine heir, along with his family, then circles the grave as a mark of respect and the symbol of his eternal love. It is a day of prayers and silent contemplation. To mark the end of the Urs, a procession carrying sacred cloth or chaddars and flags makes its way through the city to the khanqah.
after evening prayers are draped over the tombs of the saints in remembrance and reverence. Loss of consciousness is regarded as union, an emotional identification of seeker and sought. The way of the Sufi cannot be understood by means of the intellect. It can only be lived. The call to the Sufi life is an individual way, an aspiration to transcend society, one that shall never be lost.
अजमेर वाले ख्वाजा एक परदेसी आया है, अजमेर वाले ख्वाजा एक परदेसी आया है, अश्कों के मोती नैनों की थाली में लाया है, रहमत का बुरुआ की गुंबद पे छाया है, सर पर रसूल पाक की कमली का साया है, रंजो अलम का मारा हूँ गम ने सताया है, रंजो अलम का मारा हूँ गम ने सताया है, अजमेर वाले ख्वाजा एक परदेसी आया है, जो मांगता हूँ मैं मदे मुख्तार का सत्ता, जो मांगता हूँ मैं मदे मुख्तार का सत्ता, पीराने पीर सैयद अबरार का सत्ता, दे दीजिए हुसैन की सरकार का सत्ता, लाखों उम्मीद लेके फिरोज आया है, अजमेर वाले ख्वाजा एक परदेसी आया है, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने, सोया हुआ नसीब जगाया है आपने, बिगड़ा हुआ था काम बनाया है आपने, वीरा था मुल्क आपने मेला लगाया है।